practical example of global sequence alignment. इस मॉड्यूल में हम दो सीक्वेंसेस लेंगे और उन सीक्वेंसेस के ऊपर जो हमने सीखा ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट का, कैसे उसका एल्गोरिदम काम करता है, कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करता है, उन स्टेप्स को वन बाय वन परफॉर्म करके उन दो सीक्वेंसेस को हम अलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिदम. So this is a practical example to dry run that Needleman Wunsch algorithm. For example, we have two short sequences. We have one sequence of ATG and the other sequence is GGAATGG having their specific lengths. One has a length of 3 characters and the other has a length of 7 characters. So first of all, we have to assign a scoring function. So here we are going to assign a scoring function where match has a score of +1, mismatch has a score of -1, and a gap has its penalty of -2. This is the scoring function through which we are going to evaluate this alignment and through which we are going to fill the matrix. So the first step to perform this task is we have to produce or generate a grid matrix. The length of the grid matrix will be 1 plus the length of one sequence, and the other dimension will be 1 plus the length of the other sequence, and we have to then initialize that matrix. We have to initialize the first row and first column, then we have to fill that matrix, and then we have to trace back, and then we will have the sequence retrieved automatically during the process of trace back. So for example, we have this matrix. Dimensions are the length +1. So this is the +1 and this is the +1 of this another sequence. So we have generated a grid. And now to fill this grid, we have to fill each of the cell starting from here and going up to here to fill all these cells in this grid to assign values to these cells in the grid. Now each of the value in the grid will be one among the 3 possible values. So we have to calculate 3 possible values for each cell. That value may either will be the sum of the score of the cell, the diagonal in the diagonal, and the mismatch score, plus second will be the sum of the score of the cell that is directly above the cell, the vertical cell, and the gap score. So we have to add the gap score with the value of the vertical upper cell. And in the third step, we have to calculate a value from the horizontal left side cell of that specific cell, which we are going to calculate a value for, plus adding the value of the gap penalty, and then we will look at which is the greater value among these 3 values, and the greater value will be assigned to that specific cell. So we have to assign that value to this cell, then we have to assign value to this one, this one, this one, and similarly all the cells will be filled with some values up till here. For example, if we are going to fill this matrix, we have calculated for this cell, we have calculated these three values. The diagonal value we have to this is the diagonal of this cell, so we have the value of this diagonal, plus we have to add the mismatch score. So यहाँ पर जो है वो A और G एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मिसमैच है. सो हमने मिसमैच का स्कोर यहाँ पे असाइन करना है. अगर यहाँ पे मैच होता तो फिर हमने मैच का स्कोर असाइन करना था. मिसमैच का स्कोर -1 है, सो हमने 0 के साथ -1 की वैल्यू पुट की, तो ऐड की. यहाँ पे हमारे पास इसका टोटल स्कोर आया -1. फिर हमने दूसरी वैल्यू असाइन की, वर्टिकल वाली वैल्यू हमने यहाँ से ली -2, और इसके साथ हमने गैप पेनल्टी ऐड की, तो हमारे पास स्कोर आया -4. फिर वर्टिकल की वैल्यू हमने हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हमने लेनी है -2, ये -2 हो गया, और इसके साथ हमने गैप पेनल्टी प्लस करनी है, तो अगेन हमारे पास स्कोर -4 आया. फिर इसमें से हमने देखना है कि मैक्सिमम स्कोर कौन सा है. सो -4 इज ऑलवेज स्मॉलर देन -1, सो दिस इज द ग्रेटर वैल्यू, सो वी हैव टू असाइन दिस मैक्सिमम स्कोर ओवर हियर. सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1. इसी तरह फिर हम इस सेल को वैल्यू असाइन करेंगे, इसको असाइन करेंगे, और हमारे पास ये टेबल यहाँ तक फिल हो जाएगा. तो जब ये टेबल हमारे पास फिल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में नेक्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं कि सारा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास फिल हो गया, और जो जो वैल्यूज जैसे आई जहाँ से आई हुई है उन वैल्यूज को हमने उन एरोस से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कौन से वैल्यू कहाँ से आई हुई है, ताकि हम फिर पाथ को फॉलो कर सके.
फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्रेस बैक करना है। ट्रेस बैक करने के लिए हमने इस लोअर मोस्ट यहाँ से इस वैल्यू से स्टार्ट करके हम उस पाथ को फॉलो करेंगे। ये वैल्यू कहाँ से आई हुई है और उसको फॉलो करते हुए हमने यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ से भी आ सकती है और यहाँ से भी आ सकती है। सो 2 paths आर पॉसिबल। फिर इसी तरह करते करते हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे मल्टीपल पाथ्स बन सकते हैं तो इट मीन्स कि इस 2 सीक्वेंसेस के जो है मल्टीपल ऑप्टिमल अलाइनमेंट्स पॉसिबल है और हमें मल्टीपल एक से ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमल अलाइनमेंट्स रिट्रीव हो जाएंगे। जो पाथ्स हमारे होंगे वो रिस्पेक्टिव हमने उसी तरह फॉलो करने हैं जिस तरह हमने प्रीवियसली हमने सीखा है कि कैसे पाथ को फॉलो करेंगे, चाहे वो एक पाथ है या वो मल्टीपल पाथ है। यहाँ पे अब हम वो पाथ को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पाथ हमारे पास ये बनता है कि ये वैल्यू अगर यहाँ से आई हुई है, फिर ये यहाँ से आई हुई है, ये यहाँ से वैल्यू आई है, ये यहाँ से आ सकती है और यहाँ से भी आ सकती है, ये वैल्यू यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है और फिर हम यहाँ तक पहुँच गए। एक पाथ हमारे पास ये बन गया। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा पाथ्स पॉसिबल है क्योंकि ये वैल्यू यहाँ भी आ सकती है। तो हमने यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे करते हुए इसको करते हुए फिर हमारे पास ये दूसरा पाथ। लेकिन यहाँ पे तीसरा पाथ भी पॉसिबल है और वो पाथ है कि अगर हम यहाँ से इधर मूव करते हैं, फिर यहाँ पे मूव करके यहाँ पर आते हैं तो एक यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यू यहाँ से भी आ सकता है। सो वी हैव टू फॉलो दिस पाथ आल्सो एंड देन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। सो यहाँ से हमारे पास 3 पॉसिबल अलाइनमेंट्स आ सकते हैं, बल्कि 4 पॉसिबल अलाइनमेंट्स हमारे पास यहाँ से आ सकते हैं। सो वी हैव टू रिट्रीव ऑल दोज 4 ऑप्टिमल अलाइनमेंट्स। उन अलाइनमेंट्स की जो ऑर्डरिंग है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, बट दे विल बी इक्वली ऑप्टिमल अलाइनमेंट फॉर दिस 2 सीक्वेंसेस। सो इस एनालिसिस के बाद, इस प्रैक्टिस के बाद हमें पता चला, हमने डिस्कवर किया कि स्टेप्स को कैसे परफॉर्म करना है और अलाइनमेंट्स को हम अब यहाँ से कैसे रिट्रीव करेंगे। अब हमारे पास 4 पॉसिबल अलाइनमेंट्स आई हुई है। एक अलाइनमेंट हमारे पास ये आया हुआ है कि दिस इज द 1 पॉसिबल ऑप्टिमल अलाइनमेंट, दिस इज द सेकंड वन, अ थर्ड वन एंड अ फोर्थ वन। अगर हम इसको स्कोर करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिमिलरिटी बेसिस पे इन अलाइनमेंट्स को स्कोर करता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ सिमिलरिटी स्कोर्स 1 फॉर एग्जांपल, सो इसका स्कोर 1 + 1 + 1, इसका स्कोर हमारे पास 3 आ सकता है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं गैप पेनल्टीज को भी इसमें से काउंट करता हूं तो -1 -1 -1 और -1, तो इसका स्कोर हमारे पास 1 2 3 4 -3, इसका टोटल स्कोर हमारे पास -1 होगा। तो इसी का भी हमारे पास -1 स्कोर आएगा, इसी का भी -1 आएगा और इसी का भी -1 आएगा। All the 4 alignments will have the same score because they were retrieved by the same alignment matrix, by the same process, और इन चारों में से आप किसी भी अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। ऑल द 4 alignments आर बेसिकली द ऑप्टिमल अलाइनमेंट्स। सो दिस वाज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द Needleman-Wunsch algorithm which was applied to 2 short sequences which were aligned globally through Needleman-Wunsch algorithm.